तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ, क्या गेम का नाम है बे, किंगडम कम्स। तो तभी मैंने खेली थी ये थोड़ी सी गेम शाम को। तो पूरी स्ट्रीम कर नहीं पाया मैं ढंग से, क्योंकि मेरे को PS5 आ रहा था, तो PS5 की स्ट्रीम की थी। तो अब उसकी स्ट्रीम कंटिन्यू करते हैं, तो लेट्स गो। हो गया स्टार्ट। तो क्या कर लिया था अपन ने? ओके 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 ओके। पचास FPS आ रहा है मेरे को। सेटिंग कम कर देता, इसकी ग्राफिक्स की हाई कर देता। ठीक है ना, 55-60। गेम अटक नहीं रही, क्या अटक रही है? नहीं, अब बिल्कुल सेट हो गई गेम। अब भी 40-45 FPS आ रहे हैं। गेम के ग्राफिक्स इतने खास हैं नहीं, तो उनको कम ही रखे तो अच्छा है मे बी। एक सेकंड रुको, मैं कुछ काम कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। गुड मॉर्निंग ब्रो। अरे गुड मॉर्निंग आरजे, क्या हाल चाल है? वेलकम टू स्ट्रीम भाई। अरे आरजे, नोटिफिकेशन आया क्या? क्या गेम है ये बताओ जरा। अरे ये मतलब स्टोरी टाइप गेम है, स्टोरी है। और मतलब फ़िलहाल अभी मेरे को भी कुछ खास पता नहीं इस गेम में करना क्या है। बाकी ये बंदा है, इसका मतलब मदर हाउस वाइफ है, और इसका फादर जो तलवार तलवार बनाता है ना, वो है। ठीक है। हाँ अब ठीक है, 60 FPS आ रहे हैं, बहुत है 60 FPS। I'm glad you stopped by. हाँ आया था नोटी, ठीक है फिर ठीक है। मैं वही सोचा, मैं नोटी These नहीं are आया अभी। strange times. Strange and ill-omened. डिलीवर But द since I so चारकोल, well ओके। each Lord Sir Radzik, I think you know the answer. True. But where will Sir Ratsik take रोब the नहीं करना silver? हमें, नहीं Can hardly लूटना नहीं tell. है हमें इनको। Now it's यार citizens मैं एक बार spend. थोड़ी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, रीसिंग को नहीं कर देता हूँ। करना क्या होता है अभी कुछ नहीं पता मेरे को, गेम स्टार्ट Unfortunately, हुआ that's not है, my तो fault. अभी देखते हैं क्या करना है। Perhaps हाँ Sir ठीक है, Radzik अब ठीक है remain गेम, at the ओके। castle until this whole unhappy story. हाँ टॉक कर Can you लेते हैं not इसे। see I'm busy with Master Fafa here? If it's charcoal you want, lad, go and talk to my helper. ओह ओके। अब ये Welcome, चारकोल लेना है Master और उसके Tobiel. पापा को डिलीवर करना है, क्योंकि वो पाप तलवार बना रहा है ना, तो Good उसका day. चारकोल लेनी है। ओके। See you later.
ले ली। Where will Sir Ratsik take the soul? ओके, Unfortunately, that's not my fault. Perhaps Sir Radzik. अभी इसकी स्टोरी वटोरी कुछ नहीं पता, धीरे धीरे खेलेंगे जब स्टोरी वटोरी पता लगेगा। चारकोल हमने ले लिया है, अब डिलीवर करना है चारकोल। अभी नॉर्मल गेम चल रहा है। अबाउट द थिंग यू वांटेड एंड डायलॉग। डायलॉग क्यों? ये चारकोल लिया नहीं क्या हमने? इन्वेंटरी खोल के देखने थे। वेपन, आर्मर, फूड, फास्ट, अदर, डोर की, गन की। नहीं, चारकोल नहीं दिया भाई। ओके ओके ओके। Take care. Add to basket. Check basket. Okay. You have an item. You have item in your basket. Do you want to really exit? नहीं. X to close deal. Okay. You don't have enough money. Okay. ये कितने का हो गया? ये 0.2 का है और मेरे पास कितने डॉलर थे वे? यू पे $25। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है। Let's talk about the price. Aye? ठीक है, ट्रेड ऑफर, लास्ट ऑफर यू एक्सेप्ट। ओके, you don't have enough money. Make offer. I'm finished. This is going nowhere. See you later. ₹24 है मेरे पास। See you later. Let's have a word about the price. मम्मी, to help make offer. You don't have enough money.
No deal then. चौथी है चलिए See you later. Let's talk about the price. Why not? Your last offer is not accepted by the trade. Your current offer, trade last offer. Tough luck. Hey, Pip! Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Henry, I'm glad you came. Satin, damask, scarlet to please the ladies in your eyes. Just come right up. God be with you. Good luck then. About time. Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool? No, I don't. About time. Have you got everything I want? Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword today. I'll be with you. And with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me.
God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Bye-bye. Well landed! Damn. Take that! All right, now you're... You're going to cry now? You know... Dopsy diddy. Cunt! Now. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. You bastard! Take that! Sod! A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one.
यहाँ पे आ जाना भाई उड़ली साइड Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. भाई You ought to learn to do that yourself. ये माँ बिना हाथ लगाए Thanks, ठीक Ma. कर देती है भाई. आइसमैन भाई वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल चाल है आइसमैन? हेलो ब्रो आइसमैन हेलो. Just come right God up. save you, Henry. Good health to you. Want to try your luck? Dice? Good luck. Rakes, hoes. So, bring it on. Rags, fabric, brocade, satin. You'll find it all here. Rakes, spades, forks and axes. All you need to tame Mother Nature. I hope that's the end of it. Thread, long and strong to sew up anything you need. It wants to itself. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. Then you'll need a rake. Asparagus for taste and prunes for what ails you. कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ. Goodbye. Instruments and tools. Everything for work and home. Even make your man cry like a little lad. Come and buy some. Goodbye. अनीफ भाई वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल चाल अनीफ? That's great. Goodbye. That's stolen. What are you trying on me? Get the hell out of here. Oh, take this.
इसको क्या पता कि स्टोलन है भाई? इसको क्या पता है चुराई हुई कपड़े हैं? चलो भाई मैं पैर लेता हूँ। ये अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है भाई। How are you? That's good. ओके सेल करना है मेरे को। That's stolen. What are you trying on me? Get the hell out of here. इनको क्या पता भैंचो स्टोलन है? क्या बकचोदी है भाई, क्या पागल आदमी। Good health to you. खड़क मत करा। Take care. सेल करना है मेरे को, सब कुछ सेल करना है। अब बता। I'd like to discuss the price. Why not? Dark at home? A torch will help. Your field's May like the Lord watch over you. Here's a hoe. Need straw for the winter? Satisfied? Then you'll need a rake. A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. देता 15 में कोई। I'll go for that. ओके तो मैं अपने कपड़े तो बेच सकता हूँ ना। मैंने अपने कपड़े निकाल दिए तो आई थिंक सो। मैं रुक जा, मेरे को कपड़े निकालने दे। लेट्स मेरे को मेरे कपड़े बेचने थे। मेरे पास हैं कपड़े तो मैं मेरे वाले बेच देता हूँ। ये तो नहीं है। Let's talk about the price. Sure, why not? Here's your change. Thanks. A pleasure as always. Is this enough? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Very well, I agree. For the kitchen or the field, buy fine wares right to your house. अब अपन कोयला खरीद सकते हैं। हेलो हाँ गेम खेल रहा हूँ। इतना ही टाइम लगेगा अगर अपन तो इतना ही टाइम लगेगा अगर अपन पता क्या कहते होया फिर जानियन कौन रोक्स के है होया जानियन कौन रोक्स के है। Let's have a word about the price. Why not? हाँ मैं सही नाटक को तो समझाना है। Agree? और बता। I'd almost shake on that. Almost. गर्मी तो भाई काफी। See now, I knew we'd come to an agreement. हाँ ओके और ठीक है कर ले बात।
About time. Have you got everything I wanted? Kunish didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took meaning he gave them to you, or took meaning stole? If you didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. About time. Have you got everything I wanted? I have got to go to the sword fight lesson. Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. ये मेरे को एक बार देखने दे यार, उसने क्या कहा था, कितने कोयले लेके जाने हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने From the charcoal burner? I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. हमारी इन्वेंटरी में 10 तो पड़ा है चारकोल। See you later. God be with you. Take care. Let's have a word about the price. Aye? Aye, that would do it. ओके, ये ले लिया अपन ने। अब ई पे चलते हैं। ई पे चले या एफ पे चले? ई पे चलते हैं। You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult?
I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. क्या गेम है ये? Yes, Bro, but Goodman Deutsch. अभी आया था ये This is 2017-18 में ये गेम मतलब नया ही है गेम तो एपिक पे फ्री मिला था तो मैंने डाउनलोड कर लिया तो खेल के देख रहा हूँ क्या गेम है अभी मेरे को कुछ खास पता नहीं मतलब जिसने खेला है वो ऐसे बता रहा विचर जैसा है विचर जो गेम था ना उस जैसा I might have an idea. स्टोरी बेस्ड Deutsch deserves to be taught a lesson, doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such और नसीद क्या हाल चाल है भाई? It made me think of that huge बाकी welcome to the parliament stream. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for Father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Okay. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. God be with you, Henry. Henry's come to see us. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty! The fool! Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight.
ओके वाइफ चलेगी उसकी. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Dodgers. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Oh भाई. Nice. Fucker! I'll make you pay for that. Oh. Well landed. Yeah! What are you doing? For God's sake! Stop right now! Paul is on his way! Damn! Let's go! Run, you coward! भागो बे. मैप तो अच्छा है भाई इसका. Good day, Henry. हो गया. Let's go. Good health. क्या यार इंतजार करना है क्या? हाँ यार इंतजार करना है. आ जाओ हराम करो बसवा. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot.
कॉल कर लो ना. About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer? No, I don't. मोबाइल ना पा लो देखो देखो मैं घंटी मार रहा हूँ. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. करो तो भाई भी. Good. Once again. आ तो रही है. खुली आवाज तो. यो गेम खेल रहा है मैं मत गेम इंस्टॉल करवाओ मम्मी. गेम की फोन कितनी औकात है इसमें गेम मत खेल. डिलीट कर रहा है. डिलीट कर सारों को. Nice. Good. Once again. Nice. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Very good. Now you're getting it. All right.
Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Fine. Not bad. Again. Good. Once again. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. Welcome, Henry. Here, enjoy it. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. How are you, Henry? Yeah, about time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son.
Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together.
It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Henry, are you all right? What's the matter with you, Henry? What's the matter with you, Henry? That will do. Go and get those damn Here are those nails. nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. What are you loitering around? Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. सौरभ मित्तल ब्रो, अरे सौरभ भाई वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल चाल है साले? सो जा, पूरी रात से जगा हुआ है Man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Anji! Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house.
talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? लड़ाई हो गई भाई। Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? अबे साले जा अंदर। You can't go back! Get through the gates! Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee!
Very good. Go to hell, you Tatar beast! Yeah. ये होता था पहले बहन चो देख रहे हो Yeah. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Go! They'll kill you all! Yeah! Run for it! Run for it! Oh my God! No! Flee! To Talmberg! Oh, fuck off, I'm being said. Flee! Ja. Tudod, hogy fog végződni? पीछा ही कर रहे हैं भाई Kopsz egyet! हो गया लेट्स गो लैंग्वेज कैसे चल रही है Jesus Christ! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hagyjuk! Húzzunk innen! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages.
Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. हाँ सारा 40-45 मिनट तक ही चली अगर गेम ना चला बाद ना तो 10 मिनट As I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. Power supply कितना power The soldiers the boy didn't recognize. हाँ तो तरबंदी करनी They पड़ेगी could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. फिर इन्वर्टर यूपीएस मोड पर करना पड़ेगा पीछे सेट हो यूपीएस मोड पे फिर वो चार्जिंग पूरी डालना करे यूपीएस चार्जिंग करे है If Sigismund attacks, इन्वर्टर मोड पर है इन्वर्टर मोड चार्जिंग अच्छा करे है. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? UPS लगा रखे हो देख मैं UPS लगा रखे ऊपर तो इन्वर्टर में शिफ्ट कर रखे है ठीक है मेरे What's your name, boy? मेरे कने ठीक है UPS चाल जावे है लाइट लगातार 20 मिनट 30 मिनट 2 घंटे इंतजार करूं. Did he make it inside the castle? ना बेरो रहा मौसम खराब हो रहा तो स्ट्रीम बंद ही करनी पड़ेगा वैसे तो करना. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway. लगा तो रखे हो लेकिन चला थोड़ी इसको मान ले बारिश आएगी तूफान आएगा लाइट चली गई वो लाइट ना बेरो साले पूरे दिन ना आवे. Robard, take care of him. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. हाँ लगवा ला कुछ बढ़िया यार वो यूपीएस में इन्वर्टर में नू है अकेले इन्वर्टर होगा ना तो तेरी वो को क्या गया बंद होकर दोबारा चालू होगा तेरा पीसी. नॉर्मल माइक्रोटेक को ले रखे हो तो नॉर्मल शायद 2-3 हज़ार रुपया पाएगा. हाँ नेट लगवा लियो. हाँ वो लगा देखो आजकल मेरे दोस्त है ना कमल ने नंबर दिया था भाई जल्दी लगवाना मन थोड़ी तो जल्दी लगा देखो तो क्या दिए अनलिमिटेड को मतलब अनलिमिटेड है कोई जीपी जापी को वही करना है. कंपनी को नहीं कैप है इसमें नहीं है इसमें कैप है मैं तेरा था नंबर दिया ही है कोई यही फायदा है कि इसमें कोई कैप नहीं है.
मैं लगवा रखूँ मैं पागल को ना हाँ लगातार आओगी स्पीड नू कदे कदे यार देख नेट है तो ख़राब भी तो हो ही है बाकी मन ने सारा चेक कर रखा है नारनोल का नारनोल में तो बेस्ट स्पीड और है तो बेस्ट क्वालिटी कोई नहीं दे इसका BSNL में कैप है पहली बात तो और फिर BSNL में बताओगी तेरे 50 Mbps आओगी तेरी 5 Mbps Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Don't you start. I heard about your father. Oh well, they say he was a I wouldn't mind a bite to eat actually. To make horseshoes. He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Must. Just like that. What I've heard about it is a dried skin plant. And what did Betty have to say? She was wealthy, you can imagine. Even more when I told her Tonga would take everything she makes. That's great. A bit of extra coin never hurts.
Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare. Bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. And then death descended on Skalitz. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it.
I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them, and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Really? I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Move in, people! Come on! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. You should have fled to the wood. God be with you. You know what's happening? Sigismund, who else? That bastard conquered Skalitz, and now he's come to take Talmberg. Take care now. Listen up. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst.
but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the plane of scouts. Then who is it? The scouts Giv is sent to scout, to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all men. An army like that costs. Well, anyway, we'll find out when they get there, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. निकाल लिया. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies,
and likely men as well, to follow the Scallots people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done to me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. गरम भर लिया ना उमत अने रहन दो ठंड ले मटका माता ही अरे लिया मटका मार उत्तर गरम से मटका माता ले का सो I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard.
Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. Hello, Bivar bhai. It seems to me. हेलो हाँ भाई हेलो भाई कैसे हो बड़े दिन बाद भाई बहुत बढ़िया क्या चल रहा है अभी तो गेम चल रहा है द किंग कम्स नई गेम आ गई ना आर्क सर्वर में डाउनलोड कर ली पागल है क्या 220 जीबी की है हाँ क्या हुआ लगा रखी है हो गई आज रात को करूंगा फिर खेलते हैं कल मेरा तो वेरीफाइंग कह रहा है 71% हो चुकी है वेरीफाइंग खाली और थोड़ी बची है That he and his army have somewhat strayed. सही है भाई As कल से कर रहे कल स्टार्ट हुआ जब से I am entirely beholden to the मेरा आर्क सर्वाइवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं 2 गेम्स एक साथ डाउनलोड कर रहा था रेड डेड रिडेम्पशन 2 और ये वाली कितना एमबीपीएस का प्लान है तेरा मेरा 100 Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, यार राजत भाई who का has तो been using the 160 silver है from the Scarlet's mine to fund मेरा insurrection तो सही है against the crown. Unfortunately, तो दोनों का सेम ही है ना the मेरा तुम्हारा insurgent escaped. ना मेरा Good, you 30 है happen to know, noble sir, तो वही कर रहा where he हूँ might सेम रहना be at चाहिए this था time. हुए तो As far as I अरे नहीं 30 30 Sir 30 Radzik, 30 of which you speak, 30 ही है is the king's नाचिन hetman का at Scotland. एहसान तो 6 I find it है hard to एहसान का वो imagine शुक्र that he बनाता है will आ rebel रहा है against our खेलने को मिल रहा है खाली ये भी है सही बात Nevertheless, है I can assure you that Sir Radzik is not a मैं बैठा Talmud. था एहसान के साथ सरार में It वो would be a कहाँ चले गया fool पता नहीं indeed to flee यहाँ from one आया castle, where he has little मैं chance तो of स्ट्रीम कर रहा था defense, to नई another, कोई गेम है where इसका he has फॉर even less. किंग खेल Or do रहा हूँ you चलो take the स्ट्रीम कर view लेता हूँ that my humble manner is any obstacle to your न्यू honor? गेम बोल के क्या करोगे टिच पे यूट्यूब पे Am I to inform the king's end that the Ratzik ले यार is मैंने तेरे को not in लिंक Talmberg and that मेरे he चैनल का has your loyalty? हाँ मैं ले लूँगा Sir आपके प्रोफाइल Radzik पे Kobe जाके नहीं ये is सेम ही है not बेवार here, गेमर सर्च भी कर and I लेगा have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have देख nothing. ले अभी लाई हूँ देख हाँ देख रहा हूँ Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. कितनी देर की हो गई Those who have clean consciences and वो नहीं goodwill दिखाएगा may Stream find started themselves well disposed even at 113 moments minutes like ago this, when there is little cause for 113 joy. मिनट से स्टार्ट है बोले तो यार हैकर हेल्प मैं हूँ अच्छा हेल्प मांग रहे हैं ना नोटी गेमर है ब्रो अरे नोटी ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम हाउ आर यू नोटी ये बंदा मलेशिया से है भाई ये नोटी गेमर जब स्ट्रीम के वेलकम टू स्ट्रीम नोटी भाई वेलकम टू स्ट्रीम यार हैकर गाइस इफ यू लाइक डोंट लाइक द स्ट्रीम देन लाइक डोंट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब hello noti gamer I am a fine pz a bit in here what is this game because a bit in here what is this game is about and this game is like story game like Odyssey Witcher ये फ्री गेम है हाँ उस पे फ्री मिली थी एपिक गेम्स पे अच्छा ये वो है क्या रुको मैं बताता हूँ मुझे पता है कहाँ है एपिक पे फ्री मिले तो थी ये गेम सिविलाइजेशन ना सिविलाइजेशन नहीं यार क्या है कि नहीं पता जस्ट कॉज 4 भी कभी खेलियो हाँ खेलिए जस्ट कॉज 4 की हुई है मैंने कंप्लीट स्ट्रीम वालों को बहुत पसंद है स्टॉप प्लेइंग बैटलफील्ड 1 अरे इट्स नॉट लाइक दैट ब्रो आई जस्ट फॉरगॉट टू प्ले नॉटी भाई
नॉटी भाई बोलो जी, just cause for या ये kingdom comes. इस इंग्लिश में बात कर ब्रो, हिंदी में नहीं आती, मलेशियन है ना। Okay, I'm sorry. We will play maybe soon, but now I'm practicing and grinding in the PUBG bro, so I don't time to play, so I don't play. Okay, अब क्या करना है? God be with you. क्या बात करनी है? What happened in Kuttenberg? हाँ, एपेक्स लेजेंड भी खेलने को बोल रहा है और रोटी गेम पर अच्छी गेम है। Just cause 4 and kingdom comes. What do you choose? No problem. I made come back to battlefield, but now focus on Apex Legend. You are too good, bro. You are too good in the Apex Legend. Don't stop the Apex Legend. Go grind in the Apex. Wow, PUBG इतने खतरनाक है कि वो छोटे मॉनिटर पे खेलना बेकार है। हाँ, कुछ समझ नहीं आता क्या है, कहाँ जा रहे हो। Bro, Naughty, just buy the PUBG. We will play together. We will play together PUBG. All the best for the chicken dinner. Yeah. PUBG पीसी अपना खरीदी है? हाँ, बहुत पहले की है मेरे पास। मैंने तो आज तक खरीदी नहीं। I suppose PUBG मोबाइल ही चला लेते हैं। PUBG पीसी लाइट है। अभी फ्री थी, अभी आधे रेट में मिल रही थी, खरीदनी चाहिए तेरे को। Guys, please make sure like, share, subscribe. If you don't subscribe, then subscribe the button, and if you don't like the stream. मैं बोलता हूँ। Okay, बोल। Guys, like, share and subscribe. After Prague, it's the most important city in और क्या चाहिए? Like चाहिए? If you Holy Roman Empire. If you want to He who commands the name, Kuttenberg silver is king. just type exclamation mark points and watch the points and the hours. You'll watch the stream and support the and took control of Prague. channel. English में बहुत पक्षोद है अपन। क्या वगैरह है? So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed नहीं, two watch time birds नहीं with हुआ है one मेरा। stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Do you like and subscribe Bewar Gamer? वो तेरे से पूछ रहा है। Do you like, share and subscribe to Bewar Gamer? Yes. Yes. C6 and subscribe and bell icon. What would you do there, lad? Done. Naughty Gamer, just buy the PUBG, bro. We will play together. PUBG. Deserters and other vermin. Yeah, Lord commanded you to stay here. Naughty. On Epic Games, the Ark Survival is free. Go and buy the Ark Survival. Yeah, I bought it. Have to bury them. On the Epic Store. Go and buy. Go and. Naughty, you also buy too. It is very good game. And buy all the parts and if ARK editor. You get it free, bro. You can equip it only. Go and get it. Bewar भाई मैप भी फ्री है वो। हाँ, DLC है वो, मैप नहीं, वो DLCs है। मैंने सारी ले ली। वो तो लेनी थी भाई। हाँ, उसमें से एक कमिंग सून भी आने वाली है वो। PUBG is a slow game, Apex is a fast game. Yeah, PUBG goes too much campers, but Apex is always the fast and go forward, push and but Apex में एक बग है। सुनो भाई, Apex में मेरे पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। मैं उसको 8 GB के ग्राफिक कार्ड के सेटिंग्स पे चलाता हूँ। हाँ, आराम से चल जाती है। पता नहीं भाई क्या हो सकता है। ये अच्छा बग है, मेरे लिए अच्छा है। Where did these humans come from anyway? PUBG is slow, bro, but it's like fun. It's like real life, and the Apex is like cartoon. It's not my type. It's not my type. PUBG को hack करना है ना। Okay, bro. Have you continue work at office? Sunday will start gaming again. Now outside. Okay. You are on the. Okay. Work. Okay. Do your work, bro. Okay. Bye. Thank you for watching and thank you for coming, bro. Thank you so much for coming. आउट ऑफ स्टेशन से आया वो। वो काम करता है ना भाई, ऑफिस में होगा अपना।
अपनी तरह नल्ला थोड़ी है। यही बात है ना, कॉम्बैट एरिना। ओके लेट्स गो। अपन भी तो कमा रहे यूट्यूब पर बैठ के। कितना खाली थोड़ी ना बैठे। कितना सब्सक्राइबर है तेरा? नहीं मैं नहीं कमा रहा। कोई नहीं कमा रहा बे। अभी लॉकडाउन में बढ़ना तो चाहिए। लाइव स्ट्रीम से अच्छा वीडियोस में आते हैं यार, मैं तो कह रहा हूँ ये। ऐसा कुछ नहीं ब्रो, हर जगह आते हैं, बस आने वाले के हर जगह आ जाते हैं और जिसको नहीं आने होते ना। दिल नहीं बोलता है लाइव स्ट्रीम में 2-2 घंटे बैठने से अच्छा वो लोग कहते हैं मैं तो यहाँ 10 मिनट बैठ के चले जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट ब्रो। मुझे भी नहीं पसंद यार लाइव स्ट्रीम करना 2-2 घंटे तक 2-2 घंटे तक। नहीं मैं नहीं, देखो अब जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ तो मेरे को पता भी नहीं मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। जस्ट प्लेइंग, समझ गया क्या कर रहा हूँ? हाँ 1-2 जितनी की भी आए, आई डोंट केयर ब्रो, आई एम जस्ट प्लेइंग। कोई कमेंट आता है तो उसका रिप्लाई दे देता हूँ। करना क्या है जस्ट कॉज 4 में मुझे तो समझ नहीं आया था क्या करना था क्या आना था। मेरे Xbox में थी वो। PS5 का डिजाइन देखा नया? नहीं देखा मैंने। अच्छा है भाई। थोड़े फेक डिजाइन भी है, थोड़े वो क्या कहते हैं। अबे नहीं, कल रिलीज हो गया ना। I need to get out of here. PS5 design. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. मेरी स्ट्रीम देखना, तेरे को दिख जाएगा। कल मैंने पूरी स्ट्रीम की थी उसकी। कितना महंगा होगा? I have to bury my parents. Let's hotels. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in a shit fight. Otherwise, forget it. कातिल डिजाइन। I will try to think about Xbox का भी नया वर्जन आ रहा है ना? हाँ एक्सकोप का तो आ लिया ना, पहले ही आ लिया। सुनियो मम्मी तेज करिए पंखो। PlayStation में भी क्या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? 4-5 हज़ार है साल का। अगर तेरे को ऑनलाइन गेम खेलने तो खेलने का मतलब गेम का रुपया अलग। I need to get out of here. Xbox में भी वैसी है। You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you of all people out? चलो भाई मैं चलता हूँ। Is there someone here who trades in goods? कभी-कभी स्ट्रीम पे आ जाया कर बे, लाइक कर जाया कर, शेयर कर जाया कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कर। मेरा दोस्त है, सब्सक्राइबर बढ़वा दे और तो कुछ नहीं तू। For anything else, you should see a fellow चलो जाने called दो, अभी नहीं, मैं 5 अकाउंट से मेरे सब्सक्राइब कर देके जाता हूँ। उससे वे 5-6 अकाउंट से करने का फायदा है नहीं ना। तो अपने दोस्तों में शेयर करेगा तो वो आएंगे। शेयर कर दूँ? You'll recognize him डिस्कॉर्ड पे मेरे सर्वर पे। He looks like he's never had a decent meal in his life. That business with Sigismund turned out well in the end, didn't it? Aye, that was a good start. Now we need to drive him and his war whores out of Bohemia for good. Please help this channel to grow. Let's go. Nice. Good day to you. What do you need? Grow. Can you tell me who I can buy something from or sell to? You want Vodafone, the fellow that fixes the weir at the Tomberg fish pond. He should be around the granary somewhere. What do you think about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but it was a dangerous situation. That Sigismund is This game is boring, so many talking. It's not boring, bro. It's fun. God alone knows what he'll get up to next. You don't like it? I like it. It's like that. It's like that. You love Apex, I love PUBG. It's not different. Both are battle royale, but both have different conditions and different mans. So, listen, what you like? We like silent game. We like battle royale game. Good day to you. His choice. May the Lord watch over you. Notice there is a dialogue in our country.
just developed. It's her choice, so it's my choice. वही सोच के बोला था Good मैंने, day to it's you. her choice. What do you need? Yeah, I know. Bro, Different preference. difference. Preference. Yeah, it's like that. Can you tell me who I can buy something Is from? there a Shall to? trader here? Everyone Oh, fled no, here no, with no. only what they could carry. End the But dialogue. I reckon Votava the pond keeper wouldn't let even Sigismund interrupt his business. I saw him by the granary. You can't miss him. He's skinny as a bulrush. Ah, yes. Your choice, bro. Yes. Sigismund's visit this morning was pretty alarming. This, bro, this And dialogue no is mistake, on that trending army of his is in our enormous. country. It's a good thing Sir Divish is such All a fine says speaker, it's or her they'd have choice. squashed It's us her like choice. bugs. It's her choice. All the best for the game. Make sure become king in the game. Yeah, God bless. I'm trying. Is she? Is she the hot? That I like. Oh, but no, whoops. They say they can slice a cow or a man in two halves. Good luck to you. No, I didn't know she did that. She only started not long ago. I heard they eat their prisoners in अब करना क्या है मेरे को? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है मेरे को. Dead. I was surprised myself, but I wasn't sure. All right, son. Jesus! It's terrible what's going on in our land these days. No, but I cut off the top roots at the time. Everything points to it, can't you see? God be with you. Can you tell me where I can buy or sell something? Someone to do business with. Well, Votava often gets things the merchants don't have. The last time I saw him, he was by the granary. Try him. He thinks about trade day and night. What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. And just as glad it weren't Sigismund. For sure. And Skalitz is a rich town, so there was plenty of loot for the taking. 2 birds with 1 stone. So he might be satisfied and leave us alone. Reckon we'll see soon enough, one way or the other. By the way, Henry, it is Henry, ain't it? I was sorry to hear about your parents. They've gone on to better things. Sir Divish certainly put Sigismund in his place. You're right there. That's Sir Divish for you. May God grant him long life. God be with you. Hey, you! What are you doing? Ooh.
God be with you. Can you tell me who I can buy something from or sell to? Aye. Votava, the pond keeper, is your man. He ought to be by the granary. At least that's the last place I saw him. Farewell. One of the soldiers. There's that many brigands roaming around. You never know if you'll come home from the fields alive. And the nobles are doing nothing about it. Aye. Not a thing. What in the... Are you deaf? You'll think he had blue blood. What is it this time? Make something special. Oh, My respects to you. Farewell. Good day to you. What do you need? Is there someone here who trades in goods? I don't know. All the Tomburgers fled from the village, so it won't be easy to find anyone. When I want something, I go to the local pond keeper. He can usually get you anything you care to think of. He's over by the granary. But if it's food you want, you're better off going to the cook. She's more pleasant to deal with. Take care now. वैभव ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम। ये कौन सा गेम है? ये गेम है ब्रो, पता नहीं क्या नाम है इस गेम का, अजीब सा ही नाम है। किंगडम्स कम, ये फ्री मिला था एपिक पे, तो मेरे को लगा जैसे ट्राई करता हूँ। इट्स फील इंटरेस्टिंग सो आई विल प्ले इट। I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you... मल्टीप्लेयर है क्या? नई स्टोरी है। Farewell. स्टोरी गेम है भाई, मल्टीप्लेयर नहीं है ये गेम। Good health to you. Can we trade? If you've got the coin. Good luck to you. Can we do something about the price? Why not? So this is a waste of time. मल्टीप्लेयर होता तो खेल सकते मैं। अरे तुझे खेलना है तो वो कर लेना, अभी वो फ्री मिल रहा है। क्या नाम उसका, नाम भूल गया मैं उसका। आर्क सर्वाइवल, वो आर्क सर्वाइवल ले ले। Can we trade? If you've got the coin. Good luck to you.
Can we do something about price? एपिक पे फ्री मिल रहा है आर्क सर्वाइवल रो आर्क सर्वाइवल ले ले. Is this enough? Come now. Just a little more and we have a deal. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Very well, I agree. What was that noise? In the order of the pick lock, you must at least have lock pick in your inventory. हाँ वो है गट. कुछ समझ में नहीं आ रहा लॉक कैसे खुलेगा ये. I'm not surprised. All right, can't you see? I wish I had. Can we trade? If you've got the coin.
कि कपड़े पहनो या नंगा आ जाओ। बोल नंगा आ जाओ, व्यूज मिलेंगे। लेट्स रुक गो। भाई वो रुक, उसने बोला 2 मिनट में आ रहा है, रुक कुछ तो उसको व्हाट्सएप कुछ कॉल से उसके उसके पापा ने उठाया। तेरे को मालूम है कुछ दिन उसके पापा आए थे स्ट्रीम हाँ पे मालूम है, ये। बोला था कि हाँ, लैंग्वेज की तुमको सुनाई दिया था क्या स्ट्रीम पे? स्ट्रीम पे भी चालू था वो, उसने मेरे को स्ट्रीम लगा पे उसने म्यूट नहीं म्यूट किया। डेफ किया है। नहीं नहीं, उसने स्ट्रीम पे म्यूट डेफ नहीं करता रे, वो माइक म्यूट करता है पूरा, इसलिए माइक खुला तो पूरी स्ट्रीम को सुने देता, इसलिए माइक म्यूट कर देता है उसने। अब तक वो मिक्सर के थ्रू म्यूट डेफ नहीं करता। सौरभ अनम्यूट करना। अलग ही सौरभ को नींद आ रही है, आरामखोर को, सोता तो नहीं रात को। अलग ही है भाई। अरे सौरभ क्या देखता रहता है, कौन सा एपिसोड देखता है, मेरे को बताना। कौन वो? सौरभ पूरा दिन नेटफ्लिक्स, मैं रात को तो नेटफ्लिक्स पे भी नहीं था, मैं पूरा रात जगा था 3 बजे तक, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं कर रहा था ना 3 बजे लिखा तक। था ना। 3 बजे तक मैं भी जगा था, लेकिन मैं कुछ हाँ। काम के लिए जगा था। मैं प्ले स्टेशन 5 का वो आने वाला था, मतलब अरे कैसे। कुछ नहीं, 60,000 कितने का है वो? 60? अभी उससे अभी अच्छा रेट पीसी बना लो, उसका ग्राफिक कार्ड अभी भी वो 80 एफपीएस पे ही होगा क्या। अभी रेट डिसाइड नहीं है। आर से देख, 30,000 पे तुम्हें PS4 60 एफपीएस देता है, और 65,000 पे PS5 80 एफपीएस देता है। अबे कंसोल नहीं जाता है जो 60 के ऊपर जितना जल्दी समझो उतना। वही बोल रहा हूँ मैं, वो लोग बोले 80 आएगा। अबे दिखाने के लिए तो तेरे को सीएस को भी 400 दिखाता है, उतना हर्ट्ज का मॉनिटर है। तो ऊपर नहीं मिलते कभी। एक वर्कशॉप खेलते फिर पबजी। ठीक है, ये अनम्यूट नहीं कर रहा, तू ही बात कर ले अभी साइड में। अबे सौरभ तो नॉर्मल स्लीपिंग रूटीन कर रहे थोड़े टाइम के लिए, तुम बड़े हो जाए तो जब कुछ नहीं होगा बहुत कम। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मेरा वो अटक गया था पीछे एक सेकंड। इसमें तू लीडर बन, तेरे लॉबी में पिंग अच्छी है। हाँ मेरे को मार दो, रुकना आ रहा हूँ। पबजी खेलो जब मेरे को बता दियो। इधर ही रुक भाई, अभी थोड़ा सीएसगो में एम वेम सेट करके नहीं इधर ही बैठा हूँ मैं। एक सेकंड, पबजी ऑन करो जब बता देना मेरे को। कोई पैच नोट है, रुको। बेसिकली अच्छा, क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट बूस्ट किया है बंदे का बैकग्राउंड, जैसे वैलोरेंट होता है ना, वो रेड हाँ वो दिखता रेडिश हाईलाइट हो जाता है। हाँ, इसमें वाइट होगा। बना उसको बना देते आइसमैन को। हाँ मैंने सौरभ का है प्लेइंग अदर गेम दिखता है, इनको प्लेइंग अदर गेम दिखता है। गेम लैब खेल रहा है नोबड़ा, वन म्यूट नहीं कर रहा, वन म्यूट नहीं कर रहा। रुक जा उसका पापा भी करेगा, रुक ना। उसको इरिटेट करना आता है मेरे को, वो माइक म्यूट हटा लेना तो भी उसको ऊपर नीचे स्विच करते रहने का। कर रहा है अभी गाली खाएगा वो। हाँ मतलब मैं गाली खाएगा अभी थोड़ी देर। वाला वो एम हगरा होगा, अभी मैं पहले बता रहा हूँ, वो एम हगरा होगा। गड़ 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 छोटे नहीं, एम लैब ज्यादा अच्छा है, बट एम टास्टिक भी ठीक है, मतलब पढ़ा है मैंने। खतरनाक है। गाली खाने पड़ी है मेरे को इससे। किससे? मैं इसको 12वीं बार मूव कर रहा हूँ अब। तो जा जरा खुला, अगर इसका टुनु टुनु ऑफ होगा ना तो इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, सौरभ बेरे उसने डू नॉट डिस्टर्ब पे रखा है। नहीं ऑनलाइन है, पर उसका स्ट्रीमर मोड ऑन है। चलो मैं बनाता हूँ एक वर्कशॉप रोपले को 2 डीगल वाला। अरे खेलोगे कैसे? सौरव को बुला रहे हो तुम? अरे मेरे को ये बताओ, सौरव को बुला रहे हो तुम, खेलोगे कैसे? 5 जने पबजी कैसे खेलोगे? मैं थोड़ी ना कर अभी, ये भी थोड़ी खेलेगा। 1 2 3 4 हम है ना। अच्छा, मैं थोड़ी ना पबजी 4 तो इधर ही है आइसमैन। अगर सौरभ आ गया तो। अरे सब आ गए ना डैडी। अच्छा डैडी उसने किया टाइम ओनली ऑफ लगा रहा हूँ, डैडी ज्वाइन कर लेना मेरे को, तेरे को इनवाइट दे रहा हूँ। वो मैं नहीं खेलूंगा, तू खेल। सीएस को पबजी खेलो जब मेरे को बता देना। आ रहा सौरभ आया सौरभ अब सीएस में ऑनलाइन है। सुन रहा है वो। सौरभ कुछ बसेगा, तेरा माइक म्यूट है,
स्ट्रीमर मोड ऑन कर लिया, अक्लमंदी का काम किया, टू 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 ऑन रख अबे ले। अनीस को क्यों बुला रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं गाने सुनने से बाद में कर दूंगा। माय गॉड। ए भाई तेरा क्लाउन फिश बंद कर, गाने सुनना बंद कर और इधर आ। नहीं वेट नहीं क्लाउन दे फिश उसको। ऑन रख, क्लाउन फिश ऑन रख, सही लगता है। क्या पबजी सही में क्या बोल लगता है? लेना सिर्फ, इधर मत बोल। पबजी में इसका ऐसा आवाज आता है, मेरा माइंड फक हो जाता है। ऑन कर दे, वो आ गया ना वो। इसने किया ना ऑन, इसमें नहीं किया ऑन तूने? गेम लॉन्च कर दी ना मैंने। हाँ चालू क्यों कर दिया? सौरभ नहीं आया था अभी तक। नहीं उसने बहुत पहले कर लिया था, हमारे लिए अभी लॉन्च होता है। जब वो गेम के अंदर घुसता फिर हमारे लिए समझा? सौरभ नहीं आया था ना लॉबी में। अरे तो अरे जॉइन कर सकता है वो, मेरा ओपन लॉबी है फ्रेंड्स के लिए। ओपन टू ऑन। ओ हाँ मेरा क्लोज, अच्छा इसलिए मेरे को कोई ज्वाइन ही नहीं कर पाता। लॉबी क्लोज। AB7 नो। तेरा टीआई कितने में आया था रे आइसमैन? नहीं याद है यार, मैं बिल नहीं पढ़ा ये बिल्ड का, मैं भूल गया हूँ। मेरे को इतना टोटल 75 का आ जाता है, मैंने पूरा बिल पढ़ा। अबे नो स्कोप ओके। वे मेरे को इतना लैगिश हो रहा है थोड़ा। हाँ आज तेरा नेट हग रहा है। कहाँ नेट हग रहा है? हग रहा है बहुत। हमारा सही, मेरे को 70 पिंग है, मेरे को बनाने देगा? मेरा नेट कौन यूज कर रहा है? रुक। अच्छा नो स्कोप करना है क्या? बोलो ना नो स्कोप कर रहे तो क्या? एक सेकंड। ये भी तू वाईफाई से क्या आया? भाई मैं कूदा भाई। वो ये भी भाई नहीं अटक रहा है, बहुत अटक रहा है तेरा नेट। पिंग क्या है तेरा आइसमैन? हाँ मेरे को लॉस 4% आ रहा है। हाँ तो तेरे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देख तू। मेरे को नहीं आ रहा। ये भी नूब पोप क्यों कर रहा है? क्या इन सबको 80 आता है, 70 लॉस कितना आ रहा है? लॉस कितना आ रहा है? 0 है। आरजे वो एफपीएस के नीचे तेरे को लॉस आ रहा है? किधर है? नहीं 100 दिखा रहा है। हाँ? लॉस अबे पिंग एफपीएस के नीचे लॉस होता है, वो पूछ रहा है। हाँ लॉस दिखा रहा है 0%, कुछ नहीं है। हाँ 0 ही आएगा ना। मालूम है मेरे को तो। मारा नहीं तूने? अबे सौरभ नो स्कोप कर रहा भाई। आजा ना भाई, स्कोप ही नहीं करो ना क्या ये नो। अरे हगा में भाई ये चीको अलग ही नशे कर रहा है, ऊपर जाके बैठा। चल सौरभ चल ऊपर। किसने मारा इसको? ओ बस ओपन करके मार रहा हूँ मैं कुछ। ओपन क्यों कर रहा है? अरे ओ भाई मैं नाइफ लेके घूम रहा हूँ। कोपिन मत कर, कोपिन मत कर। करना भाई, तू क्या डर रहा है? दम नहीं क्या तेरे में? भाई दम नहीं भाई इसमें, कैंसर आदमी तू। ठीक है कैंसर है तो चीको को तो रैंडम शॉट बैठ गए भाई। ओ फक में अब ओ भाई पहली बार मारा हूँ मैं ओ सौरभ से इतनी देर बाद। अब लिया चल बात। ओ रिलोड शिट। हवा में था मैं। हे एक दूसरे को मार रहे लोग भाई। 25 टैग खा के मारा है मैं। कर ले और स्कोप कर ले। अरे मारा भाई तेरे को। 4 स्कोप और लगा ले गन पे। हाँ भाई आ जा नाइफ करके आ जा। हगू एकदम तो ऑफ करना क्लोज रेंज। नाइफ क्या कर रहा है? क्लोज रेंज मारा मैंने तेरे को 1000 बार समझा। और स्कोप कर ले, और स्कोप कर ले। करता हो ना, ठीक है ना भाई 4 गोली डॉज किया इसका। ए अबे दोनों है भाई यहाँ पे। आरजे आ गया भाई मैं माउस नहीं घुमा पा रहा यार, मेरा माउस केवल अटक रहा है। तेरा नेट ही आ रहा है। नेट भाई नहीं मैं आ तो 75 पिंग पे सबको जो दे रहा हूँ ना, अब आ गया ना। अब देख तेरा पिंग लो हुआ, देख पहले तेरा नेट अटक रहा था। भाई सौरभ ने जो पट्टी दिया ना
जो साउंड शॉट नहीं है। लेते हो क्या चाचा? अरे नो स्कोप बैठता, अरे यार नो स्कोप बैठता। आना सौरभ उधर से। आरजे तो हार्ड पीक लेके ही बैठा हुआ है। बैठूंगा, तेरा प्लेयर भी गुई है। हम तो ठीक है। मैं ये करता, क्विक स्कोप करता हूँ। तेरे पीछे कूदेगा इसमें। मालूम है मेरे को। अरे यार मार देता मैं उसको। भाई मैं क्विक स्कोप कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। घंटा तो बोला ना मुंह पे कि हार्ड पिकर। हट 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 जा, छोड़ दे, हट इसको जा। लगा भाई। मैं क्विक स्कोप कर रहा हूँ और क्या। आरजे देख, क्विक स्कोप नहीं आता ना तो रोते नहीं। एमपी फीस टाइम 0 करना भाई। कर रहे हैं भाई, और कर तूने रहे कॉपी हैं। करना। हाँ ओ, ठीक है। 0-6 कर दिया फर्स्ट। हो गया ना, अभी चिल करो ना। आ गया ना 40 पे। नहीं तो क्या बन जाएगी। ओए भाई दोनों ऊपर ही है। भाई दोनों ऊपर बैठे हैं कैसे यार। मजा आया यार दे। देखो तेरे लेफ्ट में भी है क्या? चुप चुप। एक तो हार्ड स्कोप करके बैठ के घूम रहा होगा। ओ माय गॉड, सौरभ इधर आ गया ब्रो। भाई दोनों थे भाई, देख बोला ना नहीं दोनों बैठे सौरभ, रेडी बैठे। सौरभ यहाँ ऊपर से सीधा नीचे ड्रॉप लिया। ओ बच गया युवराज भाई। ओए चीकू एकदम चार्जर राइट ले साइड क्या नीचे बेटा तू हग दिया। कमरे में से। तू 40 भाई 40 पिंग पे आग रहा है तू। बाजू में भाई मार रहा है मेरे बंदे लगे के नहीं। तू। क्या कर रहा है? अबे मैंने मारा कहाँ गए थे? है। नहीं मारा है तू, सारे शॉट उसके राइट साइड मार रहा है तू। वो डर जाता है रे, मेरे सामने बच्चा है वो। ऐसा है क्या? आना अभी ऊपर आएगा नहीं। वो पड़ी उसको जो भी था, वो पीक नहीं देने वाला अब। ओ फक। अरे यार हार्ड पीक भाई, ये करता है क्या ये है? साला। वॉल्ट नहीं, भाग के आया था मैं वहां से। ये आर से भाग के आया, मैं भाग रहा हूँ पूरा, ये स्कोप खोल के बैठा हुआ है भाई। भाई दोनों उधर ही बैठे हैं। मैंने स्कोप आउट किया तभी आ गया तू, नूबड़े साले हैकर। आइसमैन हैकर। चिकू मत देखी। अलग ही नंबर है। सौरभ ऊपर आ गया भाई, ये देख। मालूम है मालूम है मालूम है। नहीं भाई चीकू भी उसके साथ ही आएगा डंडी से। चल 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 चल। If I see you again, I'll kill you. Can't do it. Thank you. I won't forget. भाई मैं दिया शॉट, बाजू में लगा है उसके, यहाँ से दिख रहा है मुझे तेज। मेरे को कुछ ही नहीं करना है भाई। मेरे को हॉट भाई, मैं उसके एम पे भी नहीं था, मैं तो गया उधर। हेलो फक यू ब्रो भाई। स्किल्स, यू नो स्किल्स। मैं इसके राइट पे था आइसमैन पर, मेरे को लेफ्ट यार उसका मेरा एफपीएस 400 पे था ना, 60 पे कटता हो तो मेरा चलेगा। पड़ी है भाई वेंडी को। नहीं पड़ी है। मैं सीधा जंप शॉट मारा। व्हाट? कौन है ये? कितने शॉट खाएगा? जा रही है जी हराम। मजे ले रहा है मैंने उसकी भाई ओहो, मेरे nice मुंह shot. के सामने उसकी बोला। नहीं आएगा। Nice. 150 रुपया दिएगा। नाइस साला सौरभ के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह शॉट लगे। परफेक्ट था तेरे हेड पे। कौन था सामने बता दो सच। ए यहाँ पे दोनों भाई, ये चीटिंग है भाई आइसमैन तेरे को लगी है, आइसमैन तेरे को लगी है, सच बोल दे। नहीं लगी है घंटा भाई। ओ उसको ओपन ही नहीं किया भाई। shut the fuck up, shut the fucking fuck up। ये भेड़िया आ जाता है साला वॉक करके पूरा। भाई मालूम है क्या क्या हुआ? मैंने स्कोपिन किया, दोनों मेरे ऊपर स्कोप करके बैठे। तो दोनों को थ्रू मार सकता है तू। अरे दोनों एक साथ खड़े नहीं थे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। भाई तेरे भाई ये आइसमैन इधर ही है, चीकू पे पीक दे रहा है। मुझसे नहीं होगा भाई। ये क्या हो गया अचानक? ये करना था आएगा ये वॉक करके ऊपर है ये रहा, इधर है।
I'm fucking the one who did this to you. अरे ऐसा भारी भारी लग रहा है ना CS:GO थोड़ा। हाँ मेरे को लग रहा है चुप चुप मूवमेंट अलग हो गया है। मेरे को सेंसिटिविटी में बहुत फर्क लग रहा है। But first, I have to find this shovel and देखा नहीं उसको ऊपर? take care of you. तेरे को क्या लगता है मेरे को मालूम नहीं है तू यहाँ से आएगा हैं? अरे मैं बट तूने देखा नहीं था वो जंप। चल भाई पैर पे लग गया उसके, चीकू के राइट साइड आ रहा है ऊपर, मार भाई। भाग दिया है अभी Under the linden तू, tree. दोनों भाग दिए भाई। तू कहाँ मार रहा है? नहीं लगा है उसको, तू उसके राइट लेफ्ट में मार रहा है, बंदे पे मारना। भाई मेरा भाई सेंसिटिव और कम करूँ क्या भाई? मेरे को नहीं क्या मालूम भाई, दोनों एक साथ है। तो हट जाना वहाँ से। एक को मार दिया। नहीं ये सौरभ पीक ही नहीं देगा, सौरभ था उधर को ऊपर है क्या? अरे सौरभ 1 HP है, तुम उसको नाइफ कर सकते हो भाई। कहाँ पे? अच्छा ये ऊपर आ गया भाई। आइसमैन बोल ना कहाँ अच्छा बोलने से क्या होगा? तब तक तो मैं टपक गया था। मैं बोला ऊपर आ गया। सौरभ को नाइफ कर दो। मैं बोला ऊपर आ गया भाई। सौरभ वाला गरा में भाई पूरा आर्ट स्कोप कर गया। अलग नहीं प्योर वाला है। और आया ऊपर वो सौरभ। ये चीकू है। चीकी बॉय लेफ्ट। व्हाट? हेलो उसने स्कोप भी नहीं किया। उसने सामने एम किया फिर मेरे को मारा। हेलो हेलो वो यहाँ देख रहा था भाई। ये हैक्स लगा के आया मैं बता रहा हूँ। अरे खेलना नहीं आता तुमको नुबड़ो को बहुत अच्छा। चल चल बाप कौन सा? चीकू चीकू टॉप तेरे साइड मर गया भाई। उतार दिया। आया एक ऊपर। सौरभ राइट साइड ऊपर भाई। दोनों भाई दोनों मेरे पे बैठे हैं भाई। मैं किसको मारूं भाई? नाइस नाइस। आरजे जहाँ आके पी क्यों दे रहा था? तेरा दिमाग खराब है? मैं वहाँ खड़ा हूँ पूरा ओपन भाई। शिट यू ब्रो शिट यू। वो दोनों लेफ्ट साइड पे। हाँ शॉट मेरा ही निकला है तेरे कोपड़े के लिए। आरजे का ओ ऊपर आ गया। आरजे ये रहा तेरे सामने। अरे हरामी तू चल के आएगा तो मैं क्या करूँ? सौरभ नीचे टावर के राइट साइड आएगा। राइट ही आएगा वो टावर के 100%। आई एम श्योर वो राइट आएगा। ओ बैंड दी मार। तू क्या कर रहा है? मेरे को लगा वो अभी जस्ट टावर से निकल के आएगा। हगू हगू इनको नाइफ करते हैं चल नुबड़ो को। ओ बैंड क्यों शॉट? और अपने साइड पे दिया बट फिर वो भाग गया। भाई चीकू अबे इतना दूर क्यों खड़ा है? आगे प्लेटफॉर्म के पास रहते हैं। गया तू भाई। सोलो बच्चे तो पास में खड़े रहना, पूरा दूर खड़ा रहेगा वो ऊपर से। करने को आसान होता है तो मैं एकदम सामने रहूंगा, वो इधर रहेगा, मेरे को पूरा घूमना होगा। हट भाई। ए भाई दोनों ऐसे। एक ऊपर है। ये रहा, ये गया सौरभ, ये गया। कूद ऊपर से बीच में, कूद ऊपर से बीच में, कूद कूद। कूदा। नाइफ काहे ले रहे हो? भाई मेरे साथ मेरा आरजे जितने किल्स हैं हम भाई। एडिट फॉर ऑल्टर। बड़ा ज्यादा है तू नुबड़े। हाँ तो तुम बंदे तो 11 राउंड। Are you fucking serious? हेलो भाई भाई उसको पड़ा नहीं मारा, तेरे गन से गोली नहीं ना 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 ना। अरे ये नूब। सौरभ तेरे पास कूदा कूदा। ऊपर भी आया था। तू सौरभ को देखना। मेरे को सौरभ दिखा ही नहीं। अभी कूदा है तेरे पास वो। अरे कूदा, मारा और भागा। नहीं भाई वो बीच में टावर क्यों गया? तू मरा ना। बीच में नहीं है वो, तेरे पास आ रहा है। आई गारंटी है ESP लगा है। ESP है भाई आईफोन पे। अरे गारंटी भाई उसने दिमाग उसने खेला तो सारा।
देखा तेरे पास आ रहा था साले, मैं बोला तो मेरे पास आया वो। गुड लक, हैव फन। मेरे को मालूम है वो किधर जाएगा। अब वो ये गेम से टैक्टिक चेंज कर देगा, अब उसको गैस करना इम्पॉसिबल है। ओ ये मेरे कौन पास ऊपर से ऊपर गिरा ये भाई? भाई वो क्या बारी हो, उसकी बॉडी ऊपर से गिरी, मेरी इतनी आरजे तेरे को पीक दे रहा था, मैं उसको दे दिया। तूने सही मारा, मेरी इतनी फटी थी ना। कैसे भाई दोनों इधर पीक दे रहे हैं। I hope that won't come. Oh! अगर भाई ये भी तू पढ़ ना, मैं जो लिख के दे रहा हूँ तेरे को टीम चैनल में पढ़। बंद हुआ, देख मेरे किल्स तो भी ज्यादा है उनसे, बोल मत। अबे उनसे ज्यादा किल्स में फर्क है भाई, जो मैं एक ऊपर है, एक नहीं 3 ऊपर है। दरबारी तू हटा दिया मेरे को पूरा, राइट आ गए सारे। ऊपर वाले को तेरे को देखना पड़ेगा। राइट से पड़ी, लेफ्ट से पड़ी, नहीं पड़ी तेरे को, सिर्फ सौरभ ने मारा। राइट से पड़ी, मैं लेफ्ट वाले को देख रहा था बट मेरे को राइट वाला। ओए अडवे, ये सौरभ होगा भाई। ये सौरभ कहां से? इसको एक तेरे राइट में तू मार। अरे मैं मारा सौरभ से ही हूं, मालूम है, बट क्यों मार रहा है? अरे वो दिख जाता है तो दिख जाना। वो मारता है उसको, उतने में हो भी जाता है। देख वो मारता है, छक्के स्टैंड बैठो। हां इसमें छक्का है। ये सौरभ का क्या गेम है मालूम नहीं, करता है पर खत्म कर देता है। इसका रिएक्शन टाइम राइट में ऊपर है तेरे। और एक वो तो लगाऊंगा ही मैं। गेट रेड। अच्छा गेट रेड किल देख अपने, किल देख तेरे किल देख और मेरे किल देख। सौरभ से ज्यादा किल है मेरे। छोटे तो वे थ्री में तेरे ज्यादा किल होंगे। मैं सात दफा कप ये ले सकता है ना मार मार के बंदों को। मैं वही तो कर रहा हूँ मैं। कितने दो तो एस लिए तूने, फिर किसने बोला इसलिए मैंने? अबे कितने भी एस लिए, मेरे से ज्यादा किल लिए। बनाने दे सौरभ को लॉबी बनाने दे। हटवे नुबड़े, उसके उसमें मेरे को 200 भी मिला। मेरे को बस आइसमैन की इसमें नेट अच्छा था, 40-30 आता है। चल स्टार्ट चलना सीखो, आना भाई। भाई हमें सब प्राइम है और एक आरजे अकेला है जो नॉन प्राइम। तेरी जल रही क्या? तू बैठ साले, हट। गेम खरीद ले। अब तुम लोग को एस लेने के लिए ले रहा हूँ मैं डी। क्या? अब हम लोग चलाएंगे डी। ओनली डी ऑफ हो गया ना, अब डी ए बी सिटी आना। चाहता क्या है तू? ओनली डी नहीं चाहता क्या है मतलब? ऑफ भी तो है इसमें, कैजुअल। हाँ ऑफ भी है बट ओनली डी की यूज करना है। क्यों ऑफ यूज करेंगे हम? हमारी मर्जी। इट्स आवर चॉइस, फक यू। तेरे को पूछा क्या किसी ने? अगर तुम में से किसी ने ऑफ चला दी ना तो सोच करियर खत्म है, करियर खत्म तुम्हारा। भाई ये सौरभ अलग ही डीगर ए भाई। ये क्या है ये? गेम भी स्टार्ट वो वार्म अप। सौरभ राइट, दोनों राइट मेरे पास है, दोनों आजा भाई। आया हूं ना तेरे पास। मेरी डी ड्रॉप हो गई। अरे तू ब्लॉक क्यों कर रहा है तू? भाई आइसमैन ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। आरजे ने मेरे को क्यों लगाता है तू? आइसमैन तेरे एक पीछे है, हां उधर ही नहीं। और एक भाई ठीक है भाई, मेरी डी ड्रॉप हो गई थी। मालूम है ये आइसमैन ने मेरे को ब्लॉक किया और आरजे ने एक टैग दे दिया मेरे को फट से। भाई मेरी डी ड्रॉप हो गई थी। इसमें एक्सटेंडेड मैच चाहिए था, एक्सटेंडेड। और अब डेड एक आरजे ने चीकू भी टैग घुस के मारना, घुस के मारना। भाई इसको 2 टैग दिया, मैं पागल है क्या? ओ भगवान से नहीं डरता क्या भाई? घंटा भाई ऑफ 2 टैग दिया। सुनो ना, ऑफ ड्रॉप स्पॉन में ड्रॉप करके आओ ना, ऑफ स्पॉन में ड्रॉप करके आओ। वो बीच में लेके आओगे, हम कहां से खेलेंगे? ओ भाई ये कीबोर्ड, भाई कीबोर्ड अटैक रहा है, ऊपर से आ रहा है। ये भी 2 टैग है, मार दो भाई। आरजे इतना आगा ना, मेरे को मजा आया। सात दफा कप। आरजे टैग यहाँ 60।
वो क्रॉस से चेंज करना है पर जल्दी ग्राउंड खत्म हो। मेरा कर ले, मेरा कॉपी कर। घंटा 60 टैग है, 2 डिक है ये। नॉट है मेरा खाली। तो 2 डिक तूने लॉन्ग रेंज मारा, लॉन्ग रेंज 30 ही पड़ता है। अरे वो लेंडी 100 इसकी है, ठीक है। ओ बहन, हेड तो लगता है ना पर भाई तू तेरे को बॉडी शॉट दिया है मैं 10 मीटर की रेंज में और तू भाई नाइस भाई। मैं क्रॉस से चेंज करा था, मेरे को मरना था उस राउंड। व्हाट? हेलो, आरजे को एक भी गोली नहीं लगी। मैं क्रॉस से जल्दी चेंज करा मैं। ऐसे कैसे बच गया भाई वो? कौन सा क्रॉस कर रहा है? ऑफ एंड ईगल दोनों रखो बराबर इसे। नहीं नहीं नहीं, ओनली डी। कोई तो गंदा टेलीपोर्ट हो रहा है मेरे सामने। हेड था प्रॉपर तेरे को। अरे मार इसको सौरभ, आ गया लेफ्ट। मार एक और गोली। एक राइट से भी आ रहा है। मार ए भी, ये हक गया तेरे पे, सारे शॉट हक दिया ये। कम ऑन ए भी, मार सिर्फ 60 एचपी है वो। सीधा रश मार उसको पड़ा, 2 गोली मारा मैं। 83 एक गोली लगा उसको। भाई 2 दिखाओ क्या, देखो पहले एक मारा, अभी एक और मारा। 83 टैग 2 हिट दिखाओ क्या। रुक मैं देखो स्क्रीनशॉट भेज के देता। स्क्रीनशॉट छोड़ना, अभी गेम खेलना। विंडोज प्रिंट स्क्रीन मैं तेरे को देता हूं। डर गया ना भाई, एक ऊपर भाई, एक ऊपर एक नीचे लड़ा है भाई। दोनों देख भाई, तीनों एक साथ देख। एक ऊपर है, ऊपर मतलब एकदम ऊपर है वो, अभी कूदा हो नीचे। माय गॉड, अभी ऑफ लगाओ, सीधा सीधा मार। नहीं नहीं, ओनली डीक बोला, मतलब ओनली डीक। ठीक है, नेक्स्ट राउंड ओनली ऑफ। मारने का बड़ा शौक रखते हो तुम। हाँ नहीं यार, कोई आया ही नहीं भाई। ठीक भाई, वाह। नोट ऑफिसर मैन ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल चाल है ब्रो? हेलो नोट ऑफिसर मैन, क्या गेम है? क्या क्या गेम है बे? ए खाली टावर में खा गया एक बंदा, जो भी है। हाँ देखो देखो। आप पहली बार हमारी स्ट्रीम पे आए हो ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे। सभी स्ट्रीम की तरह आइए, बैठिए, मज़े करिए। तो मेरे को बताइए करना क्या है इस गेम में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनिल भाई बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन, अनिल भाई बिग फैन।
कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो गाइस आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही। कल अब थोड़ी देर बाद पबजी की स्ट्रीम करूँगा, कल फिर करता हूँ इसकी स्ट्रीम। अभी दिमाग काम कर नहीं रहा मेरा। तो गाइस कल थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे इस गेम को। अभी इस गेम का साथ हम यहीं पे छोड़ते हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस गेम में अब करना क्या है। 5 मिनट हो गई मेरे को यहीं पे घूमते हुए। थोड़ी देर बाद आता हूँ पबजी की स्ट्रीम के साथ। 10 लाइक हो गए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक। भाई 3 घंटे की स्ट्रीम हो गई है। जिसने लाइक नहीं किया है मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।